day. Today I'm going to meet my friend. So we have booked a table in Plum by Benchair in Connaught Place. I'm going there, and I think this is the first get together since my marriage, and this might be the last get together before my best friends get married. So this is a very special day for us. So I'm heading there and let's see what happens today. And आज का पूरा vlog friendship पे ही होने वाला है. So I'll catch you there. Hi friends, I've got my one friend and the other is waiting inside. Yes. Happy friendship day to all. एडिबल स्मेल कर रही है. गाइस ये प्लेस बहुत ज़्यादा क्राउडेड है और लोग यहाँ एक्चुअली इतनी नीचे तक लाइन लगी है कि वो वेट कर रहे हैं कि एक टेबल मिल जाए बस. स्टार्ट हो चुकी है और हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है PO Asian. और to have sushi because Benchair didn't have sushi and we all wanted to have sushi. So now we are going to PO Asian and we are in auto. और ये वही जगह है जहाँ हम तीनों मिले थे और जहाँ पे हम यहाँ इतनी ज़्यादा वॉक्स करते थे. So this is the place. A lot of memories are coming back. बोलना वही कुछ. I'll catch you later. Bye. तेरा वो अकेले वाला कहाँ है? हम भी अकेले तुम भी अकेले मजा आ रहा है कसम से. रोमांटिक. अब देखो रोमांटिक. See, Luna supports at in the morning. Oh yeah. Since these girls were late. Yeah. 2 hours late. Not actually 2 hours. देख भाई इसमें कुछ नहीं. Girls come. It's looking very nice. येटी तो दिख रहा है. कहाँ है picture? नहीं है. नहीं ना यार मैंने वो
वाला आगे चल 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 पता चला हमारे वाला अंडर कंस्ट्रक्शन ठीक है मैं ये वाला बैग लेके चल रही हूँ But I'm not covering that. Let's go. अब हम जा रहे हैं POH. Yeah, even I hope we get the seat we have because we haven't done any prior booking. चेंज्ड क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और वेटिंग थी अराउंड 1 आवर 45 मिनट्स 1 आवर. तो अब हम निकल रहे हैं टू आवर नेक्स्ट लोकेशन एंड आई विल टेल दैट लोकेशन जब हमें सीट मिल जाएगी. लेट मी कंफर्म कि हमें मिल रही है वो सीट या नहीं. ऑल्दो वी हैव कॉल्ड एंड बुक्ड बट लेट्स सी यू. It's too hot and humid in Delhi. इतने सारे लोग बाहर नहीं हैं, सिर्फ लड़कियां बाहर हैं. लड़के लपाड़े सब करते हैं. लड़के सीधा फोन पे विश करते हैं. नहीं लड़कों विश भी नहीं करते हैं कैसे. बॉयज पार्टी इज डिफरेंट. Maybe. They do chairs and set. Yeah. ओए पानी ओ गिर गया. गाइस हम पहुंच गए हैं माउंट फूजी, जापानीज पैन एशियन फूड एंड बार. और ये लड़कियों की आइसक्रीम ही नहीं खत्म हो रही. चलो भी चलो, लेट्स गो. सो गाइस वी आर इन माउंट फूजी और अभी हम ऑर्डर करने वाले हैं लॉट्स ऑफ सुशीज, डिमसम्स, बाउल्स एंड आई थिंक वी आर गोना ट्राई समथिंग एल्स एज वेल. और गोलू एज यूजुअल अपने फ़ोन में लगी हुई है, ब्राइडल ड्यूटीज एंड ऑल. और बीइंग ए नाइस फ्रेंड निष्ठा मेरे को रिकॉर्ड कर रही है एंड यू कैन चेक द वाइब ऑफ दिस प्लेस. Now I want you to speak something कि हम कैसे मिले हम तीनों और हमारी फ्रेंडशिप कैसे हुई. No, we are not gonna start from me because my viewers usually see me a lot of me, but I want you both to speak something कि हम कैसे मिले and then we are going to share कि you know one good memory that we have of each other. I think let's do that. So guys, we met in our college and during our college days I used to sit alone, and one day what happened, I opened my lunch and as usual foodie Sakshi, she came up to me and she was like, are you staying alone? Are you not having any friends? Okay, what have you got in your lunch? I showed her that I have got chole chawal and she's like, okay, can we sit with you and have? I said, oh, alright, you can have, because my mom used to pack my lunch in bulk because she used to think, I don't know, I have so many friends. So she came up to me with her other friends as well and we shared our lunch, and from that time onwards this journey began, and by God's grace it's going and it will go till Allah's death. And my best memory with her, actually I cherish all the moments spent with her, but especially our Goa trip. We went on a Goa trip from our college, and one night when we were tired, we all were so tired and exhausted, and my feet were swollen. Literally, I showed her that, look at my feet, they are swollen. And her being so kind, so nice,
She went to the bathroom, she heated up water, specially filled the bucket, poured some Epsom salt in it, and asked me to put your feet in it, and you're not gonna move. And after I was done soaking my feet in it for a good 5-10 minutes, she then applied oil on my feet, and she's like, now sleep. And then we click the picture And to then see the results. Yeah, then we click the picture to see the results as well. So that was so kind of her, and I love her so much. Yay, so sweet. Lovely. Now Golu is going to tell us one or any memory with Nishtha, and she's Nishtha. Richest of all. सो निष्ठा के साथ भी सारी मेमोरीज ही अच्छी हैं वैसे तो, बट निष्ठा मेरी वाइब बहुत मैच होती है. ठीक है, वेन एवर भी लाइक हम जब भी बात करते हैं हमें पता नहीं चलता कि कब इतने घंटे हो गए हैं, हमें सोचना नहीं 2-3 घंटे पड़ता है drive. ना. हाँ, हम मतलब नॉन स्टॉप हम कंटिन्यूसली बात करते हमारे रहते हैं. रगड़े सेम है. एक्चुअल रोना लगे. कुछ भी हो मतलब अगर मतलब शी इज़ अ वेरी फन लविंग पर्सन, वेरी चिल्ड आउट, और हाँ, Non-judgmental. non-judgmental to Open-minded. To be specific, Yeah, to be open-minded. absolutely. Modern. So and we vibe on one specific song, that is Ishq Tera Tadpaave. So that song played on our college farewell. So Yeah. हमने उस टाइम उस पर जैम किया था, और जब भी whenever that song plays निष्ठा में हम अगर हम पोल्स मतलब ऑपोजिट भी है ना, हम कहीं और भी दूर है तो हम इशारा करते हैं और स्टार्ट इश्क तेरा तड़पावे. So that is the best core memory of ours. Yeah. Yay! Okay, now Nishtha's turn. Guys, now it's Nishtha's turn to tell us कि हम कैसे मिले and what core memory she has with me and Golu. By the way, her name is Ritika, but we call her Golu. She's Golu for us. Yeah, because And she's Gulati for Golu us. once again, yeah, and once upon a time I was as well. She was Goluer. she's Golu, she's Gupta, and I'm Gulati. So it's GGG. It's GGG. GGG. All right. हम ब्रांड ओपन कर सकते हैं GGG. तू ब्रांड छोड़ अभी बता, चल शुरू हो जा. So हम मिले थे कॉलेज, Yeah. एंड मैं जो अभी मेरी पर्सनालिटी है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ गुलाटी. आई वॉज वेरी शाई, ऐसे एकदम ऐसे बैठने वाली. एंड शी केम अप टू मी ऑन द फर्स्ट डे जिस दिन हमारा एडमिशन डे था. Admission day. एडमिशन डे Yeah. था, तो उस दिन एकदम ऐसे गॉसिपिंग वे में आई. शी केम एंड हमने बातें बातें शुरू कर दी. And you were sitting the same way you were sitting right. हाँ, ऐसे मैं ऐसे बैठी थी एकदम शाय, बहुत शाय, मतलब जीरो फ्रेंड्स. ओके, फिर उसके बाद अभी जो मेरी आवाज़ जैसी हुई है वो इसकी जैसी हुई है. फिर वी स्टार्टेड कैचिंग अप डेली और हम साथ में टाइम बिताते थे. आफ्टर कॉलेज वी यूज्ड टू मीट, एंड देन फिर गोलू केम एंड वी थ्री बिकेम फ्रेंड्स, एंड देन वी हैड आवर गोवा ट्रिप. We even had more friends, to be very specific. Yes, But then we stick that's together. it. Yeah, we stick together. We stick together. We had many in between, but then each of them played their own parts. Yeah. But we are staying again here, and Fingers crossed. to many more years. Yeah. And Yeah. Core Core memory memory. of us. core Yeah. memories. And then I came up to you after that. After You that, were sitting shy. I was sitting very shy. She came up to me, and then we talked a lot, and then slowly And then she gradu- thought that I am a senior. she's a senior, and she's just trying to bully me or something, because this is that image Yeah. of college I had in my mind. But she was just And then she got to know that I'm in the same batch, and even Right. I am new. even she was new, and but then she was very confident, so Yeah. she spread that around her Aura. aura, Yeah. the blue aura. Yeah. Then came गोलू ना मुझे स्टार्टिंग में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ी ना मुझे ऐसी लगती थी ठीक सी जजमेंटल, एकदम बेइज्जती मुंह पे करने वाली. बट फिर धीरे धीरे हमने बातें शुरू करी. गोलू पहले गुलाटी की फ्रेंड बनी, फिर गोलू मेरी फ्रेंड बनी, और फिर वी वर फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स. हम लाइक टुडे वी मेट आफ्टर. I think I told that in my intro video that we three are meeting Together. together after my marriage Yeah. for the first time, and this is the and I think No, we met after for a my party marriage. also. Not three of us. I'm talking about three of No, us. we This personally. get together is happening after Right, my right. marriage. We've met before, but then there were many people, Yeah. but we didn't get this time, Yeah. this quality time And I together. also told them that maybe
you know, this might be the last get together of three of us before Maybe you'll get she to know. gets married. You'll get to know why Yeah. in detail. Gulati now will tell how we met and our core memory. Basically, you all know how we met, but then she is going to tell the quality time that we spent and her core memories. Yeah. So जैसे कि इन दोनों ने बताया, हम मिले कॉलेज में ही थे. We met in college, and to be very honest, I had zero hopes from this college because that was a girls' college. I have been in co-ed school, so वो एक बॉयज़ की वाइब नहीं थी और सारी लड़कियाँ ही लड़कियाँ. So you get a little, you know, पता नहीं कैसे होगा, कैसे किसी से बनेगी नहीं बनेगी. That auntie image. Yeah, the auntie image that I had in my mind, and then fortunately I saw one girl, you know, sitting very, you know, Elegantly. elegantly poised, yeah, and very, and I was like, let's bully her or something. My father was sitting inside in the reception, and that was our first day. और मैं गई और मैं इससे ऐसे बात कर रही हूँ जैसे, और निष्ठा क्या हाल है, मेरे को क्या नाम है आपका, कैसी निष्ठा, मैंने कहा कौन सी क्लास में हो, मैंने कहा अच्छा. इसको लगा मैं ऑलरेडी यहीं की हूँ, बिकॉज मेरे को उसी टाइम पता लगा था रिसेप्शन पे कि क्या क्या हो रहा है. एंड ये बैठी थी यहाँ पे, एंड देन व्हाट हैपेंड इज वी कनेक्टेड, एंड देन आवर एकेडमिक क्लासेस स्टार्टेड और ऐसे हम मिले, एंड देन And our Burkos dates. yeah, and Noodle then we dates. used to go to Burkos date. I feel कि स्कूल के बाद जो एक कॉलेज वाली लाइफ होती है ना, अगर ऐसे स्कूल के बाद जो कॉलेज लाइफ होती है ना, जो रियल मैंने जी है वो मैंने इन लड़कियों के साथ जी है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैड नो रिग्रेट्स दैट आई वॉज इन अ गर्ल्स कॉलेज ओनली बिकॉज ऑफ दीज गर्ल्स अराउंड मी, एंड आई एम super blessed to have these girls. If you're a girl, you're watching this, I think you can understand what girls are and how, you know, how girls friendships are. मेरे को नहीं पता था स्कूल में. I always wanted a sister, I always wanted a girl as a friend, but now I have these two. I have many more who are not with us right now, but these are the people, you know, these are my people. I can proudly say these are my people because when I have to cry, I call them. When I have a moment of joy, I call them. And when I'm scared of something, these are the people who make me, you know, feel Gulati, this is not you, please, this is not you. So that's तो रोइयो मतलब. अच्छा, और निष्ठा से मैं कॉलेज में ही मिली और ऐसे हमारी फ्रेंडशिप बढ़ी और फिर मैंने इसके कांड सुने बड़े, और बस मैं बहुत ऐसे बोली थी हमने- बादल. मेरे कोई कांड नहीं है. इसने सिखाया सब कुछ मुझे. मम्मी देख लो. और इसके बाद फिर देन केम गोलू केम इन मिड सेमेस्टर आई फील, है ना, थोड़े दिनों a little late. हाँ. हमारे एकेडमिक स्टार्ट होने के बाद आई थी. ये किसी मैनेजमेंट कोटा से आई थी. आप तो देख ही सकते होंगे समंदर के पर्ल्स. Fresh water pearls, guys. Yes. So And she came, and then and I still remember, you know, we were by the way we all are teachers. So उस lesson में क्या हो रहा था, one of our teacher our lecturer asked us कि आप में से कोई भी एक rhyme with actions आके सिखाओगे, and I want to see your confidence. And I think none of us turned up. She was the only one who raised her hand, and she Humpty Dumpty. and she did Humpty Dumpty. Oh my god. And I can't tell you, in the strength of 40 to 50, she had the confidence. everybody was like, oh my god. And ऐसी राइम मैंने ना आज तक YouTube पे भी नहीं देखी. Exactly, eye catcher जो थी ना, सही बात she है. being cute, and इस टाइम तो वो इसलिए फिर भी बहुत लूज़ किया है. उस टाइम ये और भी ज़्यादा क्यूट थी, तो इट वॉज जस्ट नेक्स्ट लेवल. एवरीबडीज अटेंशन वॉज लाइक, oh my god, what's happening in the class. And then in the lunch And she's time- very confident, but out Yeah, of she all is. the kids, She is. Then gradually that Goa trip made it happen. I can't tell you the amount Golus of are fun. lighter. I just can't tell you the amount of fun we had in Goa trip, because इससे पहले हम जयपुर ट्रिप पे भी गए थे, बट हम दोनों बहुत अलग थे. ये बिल्कुल अलग थी, मैं बिल्कुल अलग थी, और हम बस बीच में मिलते थे. But the Goa trip was like, I can't forget my Goa trip. You know? I think
कि सबसे अर्ली स्टेज पे अगर कोई गोवा ट्रिप सक्सेसफुल हुई है किसी की तो हम 3 ही हैं वो। Seriously. अन्ना अभी भी पापा मम्मी सबको मना करे जा रहे हैं। And seriously, and it was like we have thousands and millions of memories from the Goa trip. हर आप हमसे एक मोमेंट पूछोगे ना, हम 10 मोमेंट्स बता सकते हैं। फ्रॉम ब्रेकफास्ट टिल डिनर इतनी सारी कोर मेमोरीज हैं। एंड देन मी गेटिंग मैरिड, दीज गर्ल्स बीइंग देयर, and then our birthdays, we are celebrating our birthdays, then me and Golu were in the same school teaching, we being the best friends. I mean, मेरा निशा के साथ बॉन्ड अच्छा है, बट मेरा गोलू के साथ बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज we have worked as well in the same school, we being professionally best friends. मैंने इसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने स्कूल में नहीं बताऊंगी, we are never gonna disclose that we are best friends. But then one fine day I was teaching in my class and she going on the stairs, I called her, Golu, come here. And then everybody got to know gradually that, you know. So again I'm going back again and I have a lot to share, but these are the memories I have with these girls. And I think आपको ये फ्रेंडशिप हमेशा हमेशा मतलब सेलिब्रेट करना चाहिए जब भी आपको मौका मिले। बोलो शाबाश। शेर रोर ही कहता है, ये कैसे अनपढ़ता है। So basically what Gulati was telling all of you, we are just going to continue that and we are going to say that even not talking even if you're not talking to your friends, I think you should just drop a message mentioning what was the reason why you're not able to connect with them. And जो मैं करती हूँ usually because I don't talk to my friends daily, so after a few days I just message them, oh I miss you so much. मेरे को तो नहीं है, तूने देखो आता तो reels आती है, reels एक one of the ways of saying that I miss you. इसको भेज दूँगी आज। Guys, jokes apart, but what we are trying to say right now is, if you have not met your friend since a long time, please go meet them. Just even a text would do. Just text them, I miss you, I love you, and we should catch up, right? So, Just a message away. just a message away. So, and girls' friendship, not only girls' friendship though, every friendship is special. And friendship is a bond that cannot be expressed in words. I'm still having goosebumps by saying this. But what I have felt in friendship, they'll just turn you upside, they'll just turn your life upside down. वो आपकी लाइफ बदल देंगे, वो आपको बदल देंगे। जैसे बोलते ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो सच में अच्छे दोस्त हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। I am who I am just because of Sakshi. I give her all the credits. She boosted so much of confidence in me. She told me that this is what you deserve. तुम ये deserve करती हो, बोलो तुझे ये चाहिए, ये मिलना चाहिए. So this is what friends do in your life, right? So choose your friends wisely. I am sure you must have. So और आपके पास जो हैं, please cherish them. Please take care of them. उनको बचा के रखो अपने पास, उनकी केयर करो यार. So happy Friendship Day to you all. Happy Friendship Day. love you girls. So now we are leaving. हमारी cabs आ चुकी हैं और हम जा रहे हैं. See you next time. Bye bye. It was a lovely day with my friends. I'm missing Anu ma'am, Miss Poo, Prachi, but I'm happy they're coming soon. So I'm going to introduce them to the vlog and wishing you all a very happy Friendships Day.
ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें. एंड आई एम गोना सी यू अगेन वेरी सून with my next vlog. So till then, bye bye.